नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं AKSRajveer, आपका अकेडमी और YouTube एजुकेटर। और आज की क्लास में दोस्तों आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है कि बेन जॉनसन जो एक बेहतर प्ले राइट थे। तो दोस्तों इनके आज तक इनके ऊपर कितने क्वेश्चंस आपके UGC नेट एग्जाम में बने। So all the questions from all the year, जितने भी आज तक के UGC नेट एग्जाम के जो भी पेपर्स हुए, सो सभी ईयर से दोस्तों ये कलेक्शन है जहां पर लर्नर्स आपको कंप्लीटली 40 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 40 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और इन 40 क्वेश्चंस में से लर्नर्स आपको पता चल जाएगा कि बेन जॉनसन से आज तक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और अपकमिंग एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बेन जॉनसन से हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज एक लाइक जरूर हिट करें। और दोस्तों मुझे पता है कि पता नहीं कौन है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है एंड देन वो हर एक वीडियो को अनलाइक करने के लिए आता है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं और मेरे वीडियो को विजिट करते हैं। नाउ लर्नर्स की ये जो 40 क्वेश्चंस है इनमें से पहला क्वेश्चन, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन प्लेराइट। सो देखिए दोस्तों, विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम वेस्टरले और जॉर्ज इथरीज। सो लर्नर्स ये रेस्टोरेशन कॉमेडी के साथ इनको आप इजीली एसोसिएट करते हैं, सो दैट्स व्हाई ये रेस्टोरेशन प्लेराइट है। तो कौन नहीं है? बेन जॉनसन। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सो लर्नर्स देखिए इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें देखना है। सो मैं आपसे एकदम इजीली रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए टॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो एंड टॉमस नैश। सो लर्नर्स ये वो पर्सनालिटी हैं जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड से हैं और अर्लियर टाइम पीरियड से यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप से। बट अगर लर्नर्स आप बात करें कि बेन जॉनसन, सो बेन जॉनसन ओनली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं। सो एट द एंड बेन जॉनसन एंड अदर फर्स्ट में। सो लर्नर्स सी करेक्ट आंसर है आपका क्रोनोलॉजिकल बेस्ड पर। आप डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर सकते हैं। नाउ सी हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप यूनिवर्सिटी विट्स। सो लर्नर्स यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार बात कर चुका हूं और अगर आपको भी लगे सो प्लीज डू वॉच द वीडियो दैट इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड लर्नर्स आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मेरी क्लासेस का। क्रैश कोर्स चल रहा है यूजीसी नेट के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सो लर्नर्स सी कि बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है, टॉमस नैश, जॉर्ज पील एंड जस्ट सैमुअल डेनियल की भी अगर लर्नर्स बात करें सो सैमुअल डेनियल भी नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी विट्स में। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बेन जॉनसन। हाँ, सैमुअल डेनियल लर्नर्स ये बिल्कुल गलती से आ गया था, मतलब मिस प्रिंट की वजह से, ठीक है ना। बट बेन जॉनसन कैन नॉट बी कंसीडर और ये सैमुअल जॉनसन भी नहीं है। सो अगर 3 ऑप्शन है सो बेन जॉनसन करेक्ट आंसर। Who among the following is not a university wit? So कौन नहीं है? So learners क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन। So learners ये तीनों यूनिवर्सिटी विट्स। So who is not? So बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। यूनिवर्सिटी विट्स से learners आई थिंक कि 3 टाइम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नाउ सी learners की एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री लिखा है किसने? So इसको लिखा था जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन learners रेस्टोरेशन आपके प्ले राइट है और बढ़िया प्ले राइट कंसीडर किए जाते हैं। सो नाउ सी द मोस्ट लर्न एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड, क्योंकि बेन जॉनसन बहुत जल्दी लड़ जाते थे। बेन जॉनसन का मैंने कंप्लीट वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल में, सो लर्नर्स आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। सो यस, बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी नेक्स्ट वन, to the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare, and what he hath left us is an ode composed by John Milton, Ben Jonson, Andrew Marvell, and John Suckling. So learners, Ben Jonson correct answer है। ये learners जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये पिछले क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन, so this was a masque written by Ben Jonson, staged on 12th night, and it was the first masque in which Prince Charles took part. So learners, this is pleasure reconciled to virtue. Learners आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, बिल्कुल। Now see, identify the critic and their respective works. So first of all learners यहाँ से देखें, Ars Poetica by Horace, and then learners Aristotle ने लिखा है Poetics and Rhetoric, क्विंटलिन सो इंस्टीट्यूटियो ओराटियो। सो लर्नर्स बिल्कुल करेक्ट है। बेन जॉनसन ने डिस्कवरीज लिखा है, सिडनी ने एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री एंड ड्राइडन ने एन एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। सो इट मींस यही करेक्ट है।
So first one is the correct matching. Learners, no need to see the other options. Next one. So Ben Jonson disliked. So learners, you can see fantastic comedy, wide-ranging chronicle history and stupendous tragedy, and then comedies of Terence and Plautus, the ability of satire to expose human vices and follies. So learners, first and second, fantastic comedy and wide-ranging chronicle history. So I think learners, fourth one is the correct answer. Okay, yes, fourth one is the correct answer. Next one. Which of the following plays by Ben Jonson ends with the performance of a puppet play in imitation of Marlowe's hero and Leander? So learners, this is Bartholomew Fair. This is imitation of Marlowe's hero and Leander, and this particular play ends with the performance of puppet plays. Just learners, see next one. So now you are ready to select the right matching pair. So Marlowe, Faust. Fletcher, the White Devil, Congreve, the Old Bachelor, Ben Jonson, the Mad's Tragedy. So learners, correct answer कौन सा है? So यहाँ पर Ben Jonson learners only option में है, correct option है Congreve's the Old Bachelor, correct answer. The term metaphysical poets was first used by. So learners, first time it was used by whom? So learners, B answer is का Dr. Johnson. So Ben Jonson और Dr. Johnson में confuse ना हो. Ben Jonson कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है एंड डॉक्टर जॉनसन इज एसोसिएटेड विद whom? So डॉक्टर जॉनसन इज एसोसिएटेड विद, you can say, metaphysical poet or metaphysical poetry. Next one, the English satirist used a sharp edge of praise to attack his victims was. So yes, you can see Ben Jonson. Ben Jonson. Then you have John Donne. Then you have John Dryden, Samuel Butler. So learners, John Dryden is the correct answer. Ben Jonson only confuse करने के लिए दिया गया है. Next one, see learners, the title. This is the title. William Faulkner's The Sound and Fury is taken from. So learners, The Sound and Fury for William Faulkner. So this comes from William Shakespeare's Macbeth. Learners, Macbeth say, yes, life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. So learners, this is next one. One English poet addressing another. So the soul was like a star and dwelt apart. So learners, देखिए यहाँ पर W.H. Auden, W.B. Yeats, P.B. Shelley, William Blake, William Wordsworth, John Milton. So learners, William Wordsworth, John Milton, करेक्ट आंसर. यहाँ पर बेन जॉनसन लर्नर्स सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट. सो लर्नर्स, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, सो ही इज जॉन ड्राइडन, बट अनऑफिशियल, so unofficial, who is an official poet laureate? So he is Ben Jonson. The term poetic justice. So learners, poetic justice with Thomas Rhymer. And then learners, choose the correct chronological sequence. So learners, ये वही repeated है शायद. So Thomas Kidd, Marlowe, Thomas Nash and Ben Jonson, correct chronological order. And who among the following was not a member of the group University Wits? So Ben Jonson, correct answer. Bosola is a character in a play. So Bosola learners character है किसके play में? So Ben Jonson, Webster, Christopher Marlowe and Thomas Middleton. So learners, John Webster के वर्क में बोसोला एक कैरेक्टर है, आप सर्च कर सकते हैं. Then the title of William Faulkner's Sound and Fury. Next time learners, so yes, William Shakespeare's Macbeth, correct answer. Now see, the macabre element in drama was introduced by. So the macabre element in drama, so introduced by whom? So John Lilly, Marlowe, Ben Jonson, John Webster. So correct answer is just you can say learners, correct answer is John Webster. Next one, the separation of style in accordance with class appears more consistently in than in medieval works of literature. So learners, Shakespeare is the correct answer. Ben Jonson only confuse करने के लिए. Okay, Philip Sidney, Edmund Spenser only for confusion. Who among the following poets compared him tears to love's wine? So who is he? So he is John Donne, metaphysical poet. Ben Jonson only for confusion.
Who among the Shakespeare's contemporaries did not write tragedies? So John Lilly ने learners कोई tragedies नहीं लिखी. Okay. Other Thomas Kidd, Christopher Marlowe, Ben Jonson सबने tragedies लिखी. An essay of dramatic poetry. So whom does Dryden refer with the phrase, he needed not the spectacles of book to read nature? So who is he? So he is William Shakespeare. Correct answer, William Shakespeare, learners. Next one. In 17th century, writes T.S. Eliot, the metaphysical poets, a dissociation of sensibilities set in from which we have never recovered. And this dissociation, as is natural, was aggravated by the influence of the two most powerful poets of the century. So, learners, you can see John Milton and Dryden. Correct answer. Next one. Which among the following group of writers is labeled as university wits? So Thomas Lodge, Thomas Wilson, Walter Rake, no. John Fletcher, no. Thomas Kidd, yes. Francis Beaumont, no. Christopher Marlowe, and then Robert Greene, and then Thomas Noyes. Correct answer. So learners, आपने देखा 3 questions from university wits. Next one. Edward Bohn's bingo deals with the life of. So yes, you have William Shakespeare, life of William Shakespeare. Then out of 4 humors of body, the Jacobians thought themselves as especially prone to color, blood, phlegm, and then you have melancholy. So learners, melancholy is the correct answer. Now match the character with the play. So learners, yes, Walpole. So Walpole, learners, you can match Honorio. And then every man in his humor. So yes, novels. Yes, knowledge. So this is the correct matching. And now let us see, correct matching will be 4th one. So this is CADB. This is the correct matching. Now let us match the list 1 with list 2. Pledge, characters. White Devil, Maid's Tragedy, Every Man in His Humor, The Spanish Tragedy. So Hieronymo, old novel, Victoria Cremona, and Aspatia. So notice, Every Man in His Humor, so novel, Spanish Tragedy, Hieronymo, and then letters you have White Devil. So yes, Victoria Cremona. So this is the correct matching. And then you have Maid's Tragedy. So Maid's Tragedy, Aspatia. So notice this is the right matching. Which of the following arrangement is the correct chronological sequence? So learners, Every Man in His Humor, The Shoemaker's Holiday, and then Antonio's Revenge, and The Changeling. So learners, इसका जो correct answer है, so that is A is the correct answer. You can search the dates of every book. Which of the following correctly describes black humor as morbid, old age and disease, youth and passionate love, death and disease, childhood and accident? So learners, death and disease is the correct answer. Which of the following is not a revenge tragedy? So Duchess of Malfi, Walpole, Hamlet, Gabodon. So learners, Walpole is the correct answer. Next one, learners, a classical influence. A classical influence on Ben Jonson's Walpole is Juvenal, Aristophanes, Plautus, or Terence. So learners, correct answer, Aristophanes. Ben Jonson's comedies are Walpole, Bartholomew Fair, Shoemaker's Holiday, no. Walpole, Alchemist, Epicene. So learners, these all are comedy or not? So yes, these all are comedies by Ben Jonson. Identify the right chronological sequence. So yes, you have. So a game of chess, no. Thomas Middleton. City Madam, and then Duchess of Malfi, Walpole. So no, this is not correct one. Oh, Walpole, Duchess of Malfi, a game of chess, the City Madam. This is the correct answer. Learners, आप इनकी डेट सर्च कर सकते हैं. Then see, in Ben Jonson's Walpole, the animal imagery includes. So the fox and vulture, yes, correct. The fly and cockroach, no. The fly, crow, and raven, yes. So learners, the fox, vulture, and the goat, no. So learners, correct answer will be first one and third one. So A and C. D is the correct answer. In the very opening scene of Walpole, the protagonist says, "Open the shrine that I may see my saint." By the word saint, Walpole is referring to. So what is that? The sun,
Saint Arthur, gold. Apollo. So learners, C is the correct answer. Gold. This is the correct answer. So learners completed 40 questions in this particular video. And learners, अगर आपको वीडियो पसंद आया so please one like, you can share with your friends, and even you can join my next free class. So that is going to be held on next date 10/5/2020 on 10th of May on Mother's Day. And learners, do not forget to come in my class. And if you really likes my video, you can subscribe me, you can join my paid course at an academy. And if you have any kind of query, so yes, you can message me on this number that is on your screen 9125090515. So thank you so much learners. We will meet in next video. तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए.